नमस्ते बच्चों। आज हम बात करेंगे बेटा एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। सी, एनर्जी फ्लो दैट मीन्स each living organism require energy. We cannot survive if we did not have food. अगर हम भोजन नहीं ले पाएंगे तो हम survive नहीं कर पाएंगे. And that food provides us energy. So in the food chain, one organism is being utilized by the another organism. Okay, that means energy flow from one to the another one. But now you must also aware what is ecosystem. Ecosystem means a functional unit. ठीक है, a functional unit where living organisms are associated with the non-living components of the environment. This ecosystem may be small one, this ecosystem may be the bigger one. Okay, but it is certain that there will be the flow of energy. Now we will talk about how this energy flow. My dear students, energy flows only in one direction. That means the solar radiations which are coming on the earth's surface. 1% of these solar radiations will be utilized by the producers. See, that means solar radiations, 1% of the solar radiations will be utilized by the producers. That means we can say green plants, producers. Only 1% of the solar radiations, those will fall on these leaves, they will be utilized. And now from producers, the energy will flow to the herbivores. Herbivores are those animals which consume the herbs, which consume the green plants. And my dear students, when these herbivores will be utilizing the energy or food from the producers, somehow huge amount of that will be what we can say the wasted in the form of heat. Some of the amount will be utilized in the digestion, and in overall 10% of the energy that has been received from the producers. Again I am repeating, only the 10% of energy will be what we can say the helpful for make its body, and it will transfer only 10% to the next component of the food chain. That means herbivores will be utilized by carnivores. First level carnivores means flesh eater, मांस खाने वाले. और there may be the second level carnivores also. ठीक है, carnivores. So in this way we can say the energy that is coming from the solar radiation, by the solar radiations, only 1% of that energy is being utilized by the green plants, and now it will be flowing in the food chain, and it will be having a one direction. There will be no back flow. ये माइंड में रखिए बेटा, एनर्जी का बैक फ्लो नहीं होगा. और यही कारण है कि फूड चेन में जब हम पिरामिड की बात करेंगे तो एनर्जी का पिरामिड ऑफ एनर्जी विल बी ऑलवेज अपराइट. दैट मीन्स जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास एनर्जी ज़्यादा होगा, फिर
हर्बीवोर्स हैं उनके पास कम रहेगा। हर्बीवोर्स के बाद जो फर्स्ट लेवल कार्निवोर्स है उनके पास और कम रहेगा, और टॉप लेवल के पास और कम रहेगा। ओनली एंड ओनली 10% of energy is being forwarded to the next tropic level. यही है एनर्जी फ्लो। ओके, so again I am repeating the solar radiations which are coming on the earth's surface. 1% of these solar radiations will be utilized by the green plants. They will make the food. Okay, now these green plants will be utilized by the herbivores. Herbivores are those animals which consume the herbs. Green plants को जो खाने वाले हैं। अब कितना एनर्जी ट्रांसफर होगा? ओनली 10% ऑफ एनर्जी दैट हैज बीन यूटिलाइज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स। अब इनके पास जो 10% एनर्जी है हर्बीवोर्स, ओनली 10, इनके पास जो भी एनर्जी है हर्बीवोर्स के पास, उसका सिर्फ 10% जाएगा अगले ट्रॉपिक लेवल को। उसके पास जो एनर्जी बचे मतलब होगा उसका सिर्फ 10% जाएगा अगले ट्रॉपिक लेवल को। और यही कारण होता है कि 3 या 4 ट्रॉपिक लेवल के बाद फूड चेन बंद हो जाती है, क्योंकि एनर्जी अवेलेबल नहीं होती है। तो ये एनर्जी का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है बेटा। और फिर ध्यान रखना, इसमें बैकफ्लो नहीं होगा, और इसका जो पिरामिड होगा दैट विल बी ऑलवेज अपराइट। ओके, तो ये बात आप पढ़ना, कोई डाउट हो तो पूछना। थैंक यू।